Students, we are studying the chapter determiners and we have done up to question number 4 over here, right? We are about to finish our chapter today. Here is an interesting game for you to play. The grid below has a special message for you. To decode the message, follow the clues given below. Students, I will just give you the example that how this is to be done. Otherwise, this you will do by your own self because it is very interesting game and the easiest one. Cross all the planets. So students, here the name of the planets are given, like Saturn is given, Mars is given, right? And Jupiter, Earth. So you are supposed to cross them. Fine. And then students, cross all the demonstratives. So here we have demonstrative like that, and then those and so many others. आपने पढ़े हैं ना सारे के demonstratives कौन से होते हैं? So those you are supposed to cross. Cross all the words that rhyme with blow. Okay, that rhyme with blow, like blow, glow. You are supposed to cross it. Fine. And then we have another one. Cross all the articles. So all the articles means a and the. जितना भी आपको a and और the नजर आ रहा है उनको cross कर दो. Cross all the green things. So green things कहाँ है? ग्रास होपर, दैट इज ग्रीन, स्पिनच दैट इज ग्रीन, ग्रास ग्रीन, इनको भी क्रॉस कर दो. क्रॉस ऑल दी अदर डिटर्मिनर्स, जो भी आपको अदर डिटर्मिनर्स नजर आते हैं उनको भी क्रॉस कर दो. देन क्रॉस ऑल दी वर्ड्स विथ 12 और मोर लेटर्स. तो जितने भी वर्ड्स जिनमें 12 या 12 से ज़्यादा लेटर्स हैं उनको भी क्रॉस कर दो. क्रॉस द नेम्स ऑफ ऑल दी एनिमल्स. अब एनिमल्स के नेम जो हैं, लाइक ज़ेब्रा वी हैव हियर, राइट? और भी अगर कोई है टाइगर, और आप अपने आप देखेंगे उनको भी क्रॉस कर दो. तो स्टूडेंट्स, अब हमने सबको तो क्रॉस कर दिया. देन व्हाट विल हैपन? यू हैव ट्रेस्ड द मैसेज. नाउ राइट इट बिलो. द मैसेज हैज़ 2 sentences in it. So whatever words will remain, from those words you can frame 2 sentences, right? So that is the message. Then if you will write these lines here, 2 sentences here, then congratulations to you. Then students, the last one, 6. Question number 6. Fill in the blanks with suitable determiners. The first one has been done for you. May I have some more milk? February has less days than March. She has more friends than I. At the end of the road, you will find a newly inaugurated bookstore. Can you tell me the shortest route to the airport? She is an astronaut. Kashmir has the finest scenery in the world. I am feeling much better after taking this medicine. The box weighs not more than 1 kilogram. March has more days than April. So students, here your chapter is completed and I hope you all are doing your work properly in your books. Because students, देखो सारी चीज़ें हम आपको करवा रहे हैं, आपने सिर्फ वीडियो देखनी है और उसको फिल करना है और उसको अंडरस्टैंड करना है. Nothing more than that, right? So let us have a quick revision of the chapter. Here students, we have started with determiners. So here there was a poem in that we are supposed to find out determiners जो कौन से हैं, this, that, these, those, a and the are all, they are all determiners, right? Then students, we have done exercises also, and here we have studied kinds of determiners. हमने kinds भी पढ़ी थी. आपको ये सारी पता होनी चाहिए. यही चैप्टर का मेन पार्ट है. दिस इज़ द मेन पार्ट ऑफ द चैप्टर, जो आपको क्रॉस करने के लिए लास्ट में दिया हुआ है ना सब कुछ. अगर आपको यही नहीं पता कि डिटर्मिनर्स होते कौन से हैं, देन व्हाट यू आर गोइंग टू क्रॉस. इफ़ यू डोंट नो व्हाट आर डेमोन्स्ट्रेटिव, देन व्हाट यू आर गोइंग टू क्रॉस. Likewise the articles, right? Then we have filled the articles here, proper articles. Then we have worksheet number 2, and in that we understood various rules जिनके साथ हम a, an और the यूज़ करते हैं. We have studied about those rules. Then we have done worksheet number 3, that was also about the articles. Then students, here we have studied, in this worksheet we have studied demonstrative pronouns as well as determiners we have studied. And then
A and the here we have put. Likewise these we have done. ठीक है, ये सारा का सारा प्रैक्टिस वर्क हमने किया है एंड देन वी हैव रीच टू द एंड ऑफ द चैप्टर. सो स्टूडेंट्स यू आर सपोज टू रिवाइज इट थॉरली. आपको सारे के सारे रूल्स भी इसी से समझ आ जाएंगे अगर आप क्या करोगे, रिवाइज करोगे थॉरली. सो योर रिवीजन एंड योर प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे.